Thank you so much, ma'am, for such nice words. A warm good morning to all of you. Respected our Chief Guest, ma'am, Shima Varma, my dear colleagues, Hema and Shalja, respected parents, my teachers, and all my students. I'd like to welcome you all in this annual function. Parents, as we have gathered here for the function, and this is the day when we get the chance to showcase the talent of our students. And I am very glad to see that how beautifully they have performed in front of you. Like they are hardly of the age group of like 3 to 5 years, but still they have performed so nicely. They were in sync. It was like their confidence was there in the stage. Many times we also feel uncomfortable in front of stage, but still this tiny student have performed so nicely. So I'd like you all to give a big round of applause for all the hard work of our children and the teachers. Thank you so much. Parents, as you all know, in our school, the age group of our children are between 2 to 5, 5.5. So these are the foundational year of a child. And we as teachers, mentors, try our best to make sure that their foundation is as strong as possible so that they can have a better future. Here in our school, we try that they should be learning each and everything with fun, and at the same time it should be appropriate so that they can fit in to any formal schools as well. Apart from the educational part, we are also concerned about their social emotional growth. जब हमारे स्कूल में कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो वो ना केवल पढ़ना लिखना ही सीख रहा है, उसके अलावा वो सीखता है कि अपनी बात बोली कैसे जाती है, रखी कैसे जाती है, दोस्त कैसे बनाए जाते हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय कैसे किया जाता है. Gradually they learn to be independent, and most importantly they learn to be happy with themselves. For that we ensure that we must give ample time to each and every child. We must understand them, and accordingly we teach them the things that we wanted to. And as we have already mentioned that Millennium School is our Maitri partner, and this is because we both, like the Millennium School and Miracle Tours, have a similar kind of aims, vision, where like Millennium School, they are not only concerned about the academic excellence, but apart from that, they are also involved in social growth of the child. They are also involved with the student to explore what are the areas in which they are good at by exploring their other talents, so that once the child is grown up, they can pursue a career of their own choice. Like being successful by choosing your own choice career rather than running behind a successful career and not being happy after that. So parents, here, as I have said, that we all look for a holistic development of a child. So this is not possible without the cooperation of you all. As you all know, the very first teacher of a child is none other than, आप सब बताएं, एक बच्चे के लिए सबसे पहला टीचर कौन होता है? Is both parents, mother and father. No doubt mother are doing more, but it is the parent who both, mother and father, both are involved, and for that we need your collaboration as well. And as a mentor, I'll say you need to focus on only 3 things. I think that will be helping our tiny little student to have a great future childhood. And those 3 things would be, first, time. Try to spend as much as time with your children
They don't require the gifts, they don't require toys, they want people to play with them. So try to spend more time with them. They are too tiny to be exposed to other gadgets like mobile or tabs. So try to spend more time with them. That will help. Second is the patience. As we all know, when the children are growing, the difficulty of parenthood grows, and we all need to be more patient. Try to listen to them properly, give them a proper ear while hearing out. I know children take time to explain things, children sometimes say some fussy things, or maybe some out of the box creative thing which we don't correlate. But try to give them time to hear out so that they can feel the importance, they feel confident about it. And the last one is unconditional love. Now the children are too small, I know you won't be expecting much from them, but when the children start to grow, our expectations grows also, right? So do not make your love conditioned with the expectation. Try to give them unconditional love, whether they are doing certain things, good or bad, according to your parameters, whether they are able to achieve something or not. Try to give them that unconditional love, because this is what going to give them the encouragement to sustain in the world. Later on, they won't be afraid of getting judged by someone else. This is the time when their confidence should be built that strong that they can fearlessly explore the world. With this, I'll end the speech, and I hope we both, like the parents and the teacher team, can combinedly do better things for our students. Thank you so much, parents. Thank you, everyone, for your precious words. बारिश ऐसी हो कि समुंदर में उफान आ जाए, बारिश ऐसी हो कि समुंदर में उफान आ जाए, और तालियां ऐसी बजें कि महफिल में जान आ जाए। तो जोरदार तालियां हो जाएं। Now moving to our colorful annual function, where every moment is as lively as the changing seasons. Just like every season brings a new shade of nature, every phase of life brings a new story of heart. वो ऋतुएं जो हमें सिखाती हैं कि बदलाव है जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा। हर ऋतु अपने साथ एक नया संदेश ले आती है, कभी उमंग, कभी शांति, कभी ठंडक और कभी गर्मजोशी। Now let's dive deeper into our cultural colors. Next up is the performance that reminds every story begins with spring, the season of hope, color and new beginnings. It's when the world wakes up, the butterflies flutter and flowers open their eyes to sunshine. जी हाँ, जब कलियां खिलती हैं, तितलियां उड़ती हैं और हर तरफ खुशियों की रंगोली बिछ जाती है, बसंत हमें सिखाता है कि हर शुरुआत कितनी खूबसूरत होती है। आई है ऋतु लेकर बसंत बहार, बच्चों की किलकारी गूंजी छाया ऐसा कुमार, धीरे धीरे चारों ओर छोटे कदमों से आए, बसंत ही छाए, देखो बसंत ही छाए। Let's welcome our little ones from 11th Avenue branch to give their wonderful performance. आज हम लेकर आए हैं एक छोटी सी सुंदर सी कहानी, नेचर की कलरफुल फैमिली, जिसमें सबके अपने अपने नखरे हैं। कोई रोशनी देता है, कोई
कोई मेहनत करता है और कोई बस उड़ता है, वो भी बिना टिकट के। सबसे पहले आते हैं फ्लावर्स, जो अपनी खुशबू से सबको महका देते हैं और जब उन्हें कोई तोड़ता है तो लगता है कह रहे हो, हे मैं डेकोरेशन के लिए नहीं हूँ, एडमायरेशन के लिए हूँ। फ्लावर्स के बिना गार्डन बिल्कुल डल लगता है, जैसे पार्टी बिना म्यूजिक के। So give a huge round of applause for our flowers. नमस्ते सबको, आज बनाएंगे सबसे सुंदर मौसम बसंत ऋतु। फूल खिले रंग बिरंगे, सबको लगे सुहाने, मीठी मीठी खुशबू से बगिया को लगे मुस्काने। Even the clouds फूल खिले रंग बिरंगे, सबको लगे सुहाने, मीठी मीठी खुशबू से बगिया को लगे मुस्काने। अब परफॉर्म करने वाले हैं क्लाउड्स, जो आसमान में घूमते रहते हैं जैसे उन्हें कोई जीपीएस ही ना मिला हो। और जब गुस्सा आता है तो बरसा देते हैं पानी पानी, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है तो धूप निकल आती है। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे क्लाउड्स के लिए। Even the cloud come on a spray because they don't want to miss the fun. काले बादल आना, कुछ पानी बरसाना, हाय बुढ़े लोगों, घड़ी ढोल बजाना। और अब आते हैं हमारे मिस्टर सनशाइन, जिनके बिना दुनिया अंधेरी लगती है। लेकिन जब वो ज्यादा घूर लेते हैं तो सब कहते हैं, भाई थोड़ा सन ग्लासेस पहन लो। और सन सबको एनर्जी देता है, बस कभी कभी सूरज भैया क्या मम्मी ने डांटा है, गाल तुम्हारे लाल हो गए, लगता खाना चाहता है। देखो ये कौन आ गई, बटरफ्लाइज, रंगीन पंख लेकर, स्टाइल में फ्लटर करती हुई। They never walk, बस उड़ती हैं। देखो मेरे They never walk, बस उड़ती हैं। लगता है कहती हैं, walking, that's so old fashion। और जब फूलों के पास जाती है तो लगता है कह रही हो, मिरर मिरर ऑन द पेटल, हु इज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल। I am the butterfly, देखो मेरे सुंदर पंख। सवेरे सवेरे आती तितली फूल पे जाती तितली, रंग बिरंगे पंख सजा सबके मन को भाती तितली। और अब आती हैं हमारी और अब आती हैं हमारी हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स बीज, जो मेहनत करके सबके लिए हनी बनाती हैं। लेकिन इनकी मेहनत का पेमेंट सिर्फ बस होता है। बस करते करते वो याद दिला देती है, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ विद हनी। मधुमक्खी आई गुनगुनाती, फूल के रस को लेके जाई, शहद बना के खुश हो
This is best color of joy and love disoli. लाल पीला मेरा रंग सबको करे एक। ओए काय यहाँ होली आया है। होली है भाई होली है, आओ मिलकर साथ चले, सबसे जाकर गले मिले। So give a thunder round of applause for our little champs. Now, dear parents, get ready to witness pure cuteness, color and joy presenting the vibrant and lovely spring dance performance. तो जोरदार तालियों से तालियां हो जाएं हमारे नन्हे मुन्नों के लिए जो इस मंच को बसंत के रंगों से भरने वाले हैं, अपने प्यारे कदमों से, अपने चमकते चेहरों से और अपनी नटखट मुस्कान से। छुट्टियों के ये दिन है सुहाने, साथी तेरा यूं साथ रहे। बच्चों के संग बच्चे फिर बन जाए, मौज में झूमे जरा मस्ती करें। बन के बादल बन के पंछी
में से स्माइल निकल आई हो और तालियों की आवाज तो इतनी कमजोर है जैसे बैटरी लो हो गई हो। तो जरा फुल चार्ज होकर जोरदार तालियां हो जाएं। Now it's medal time, the moment every child waits for more than lunch break. बिल्कुल सही कहा। अब आएगा वो मोमेंट जिसका बच्चे इंतजार कर रहे थे, ना स्नैक्स के लिए ना गेम्स के लिए, बस मेडल के लिए। We would like to invite our director ma'am, Miss Nivedita Sahu, to present medal to our little munchkins. Iba Saad, मैम इस साइड से करिए। शक्ति, काशवी, आद्रिका पांडे, श्रेयांश सक्सेना, त्रिशिका अग्रवाल, आव्या बंसल, give a big round of applause parents, Sanchi Singh, Arika Mittal, Anvika Mittal, Ayansh Mishra, Trishika Shukla, Swastiman Singh, Vivan Shukla, Aira Ranjan, Advait Rajput, Ayansh Singh, Avyansh Singh. Ayansh Srivastava, Sadvika Srivastava, Aniket Gupta, Purvi Tripathi,